Namaste and welcome back to my channel, you lovely people. So you know the drill. If you are new to this channel, hello, my name is Shruti and you're watching Glow by Shruti. So in today's video, I'm gonna do a challenge which is reverse makeup challenge for no makeup look. So आजकल internet पे I've seen many makeup artists do this challenge. In fact, some bloggers too. कि no makeup look के लिए they do the reverse makeup challenge and I so wanted to try this. And for disclaimer, मैंने अभी तक ये एक बार भी टेस्ट या फिर पहले ट्राई नहीं किया है. So without wasting much time, let's get into this video. So you know first steps तो basic ही रहेंगे, which is cleansing, toning and moisturizing. So I have already cleansed my face. Now I am applying my toner using this rose water toner from VLCC. I have ordered it lately and इसके reviews मैंने बहुत अच्छे सुने थे, so I wanted to try this. So far so good. Now comes the moisturizer. So I'm using this Cetaphil moisturizer. Such nice moisturizing thing. Like I'll take just this much and I'll apply it all over, and it is too good. Literally इतनी ज़्यादा hydrating moisturizing cream है ये. I just love it. A tip or an advice: if you are buying any sunscreen, make sure that it has this triple plus in it. I hope you can see. Yeah, it's a gel sunscreen and it is amazing. So just taking this much and applying it all over. No matter what, do not miss on your sunscreen. Do not. Just explain to you guys what is this whole challenge all about. So basically जो हम contouring में blush होता है, all that we have to do before our foundation to create that no makeup look. So अब सुनने में थोड़ा disaster लग रहा है, but I'm too nervous कहीं skin में breakouts आने ना शुरू हो जाए. Primer very nicely, making sure कि कुछ भी skin पे ना रह जाए. So now I'm taking my dark shade concealer and मैं आज sponge से ही I'm doing everything. So guess करो अब next step क्या है? Contouring. So for contouring I'm taking this Inglot concealer in the shade W100. कुछ अधूरा सा हो रहा है. गलत तो नहीं कभी मैं ये वीडियो बनाती. दिनों बाद स्किन अच्छी होनी शुरू हुई थी. मुझे लग रहा है इस वीडियो के बाद वापस मेरे पुराने दिन आने वाले हैं. हम लगाएंगे हाइलाइटर. So now what I'm going to do is I'm going to highlight my areas like under eyes and all before the foundation only. So I've taken a light shade concealer and I am just applying it. मुझे लग रहा है फेल्ट क्यूट माई डिलीट लेटर वाली वीडियो होने वाली है. मेरा तो लग रहा है मुझे गायब हो चुका है. ब्लश अभी भी टिका हुआ है मैदान में. नॉट दैट बैड. एंड 3, 2, 1. फीलिंग आ रही है जब वो ठंडा पानी नहीं डालना होता सर्दियों में, थोड़ा सा पानी डालना होता है, तो ऐसे थोड़ी देर तक हम सोचते हैं 3, 2, 1 अब डालूँ. मुझे बिल्कुल वैसे ही फीलिंग आ रही है. 3, 2, 1 go. I'll just do my eyebrows and lips and then I'll come. So now I have done my brows and my lips as well. So this is the final outcome and results. So to be very honest, I would rate this like technique of makeup 6 out of 10 or maybe 5 out of 10. For me it wasn't a big hit because मुझे कहीं से contouring नहीं दिख रही है, but it's like अगर no makeup look है चाहिए तो contouring हमें दिखानी भी नहीं है.
दो द बेस लुक्स फाइन, बहुत ज़्यादा वाव नहीं है, बहुत ज़्यादा नाय भी नहीं है, इट इज़ गुड, बट इसके बिना भी हम ये सेम लुक अचीव हो सकती है, तो फिर इतना स्किन को हार्म करना ही क्यों है. नो, आई माइट नॉट कैरी दिस और गो फॉर दिस लुक. सो इफ़ यू गाइज फाइंड इट नाइस, तो आप कर सकते हैं इस चीज़ को फॉलो. बट अगर आपको नहीं पसंद आया और आप मेरी कैटेगरी में आते हैं, सो यू वुड नॉट फॉलो इट. If you guys really like this video, then please do not forget to give it a thumbs up, and do not forget to subscribe to my channel, like this video and share it as much as possible. I hope you had a great time with me, and see you in the next video. Bye bye.